Good morning, Amit Kumar. I think Amit Kumar is there. Amit, गुड मॉर्निंग सर। good morning. Okay, then और एक दो स्टूडेंट आ जाएंगे तो स्टार्ट कर देंगे. ओके. ओके सर। ओके अमित, अभी स्टार्ट करते हैं. अभी आपका एक्सपीरियंस है ना जीआईएस में? सर मेरे लिए तो बिल्कुल नया है ये सॉफ्टवेयर। ओके ओके. एक्सपीरियंस नहीं है मेरा बिल्कुल। हम्म. अभी जॉब कहाँ पे है? अभी सेंट्रल वाटर कमीशन में मेरी जॉब सर, जल शक्ति मंत्रालय में। अच्छा, दिल्ली में. जी जी। अभी कुछ यूज हो जेयू रहा सर है में। जीआईएस के? सर जीआईएस का काम वहाँ पे क्या है कि डैम और उससे जो आजू बाजू के रिजर्वायर वगैरह वो आते हैं, तो वहाँ कंटूर के हिसाब से हम वो देखते हैं कि कहाँ पर आप है, कहाँ पे डाउन है। हम्म. उसके तो बाद साइट ये सिलेक्शन सब करते हैं क्या? साइट सिलेक्शन मतलब वहां से, मतलब 4-5 किलोमीटर के अंदर देखते हैं हम। अगर कोई रेजिडेंस एरिया आ रहा है तो अच्छा. वहां पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। नहीं, मतलब आपका जो कुछ डैम कंस्ट्रक्शन के लिए साइट सिलेक्शन वहाँ पे होता है, या और प्रीवियसली जो एग्जिस्टेंस है उसके ऊपर रिनोवेशन का काम हो रहा है? नहीं 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 सर, नया डैम भी बनता है। अच्छा अच्छा. पूरा डाटा आता है वो 30-32 साल का। सर्वे डाटा भी आता है? जी, सर्वे डाटा भी आता है सर। तो आपका अभी काम क्या है वहाँ पे? मेरा काम वहाँ पर एज ए ड्राफ्टमैन है, मैं ड्राफ्टिंग करता हूँ सर, अच्छा डिजाइन डैम में। अच्छा. अच्छा, ड्राफ्ट सॉफ्टवेयर या जस्ट ब- हाथ से? नहीं नहीं नहीं, हाथ से नहीं सर, सॉफ्टवेयर से। कौन सा ऑटो सॉफ्टवेयर? कैड अभी तो, ऑटो कैड 3D, सिविल 3D यूज करते हैं। अच्छा अच्छा, सिविल में. बैकग्राउंड आपका हाँ, सिविल है उसके शायद? बाद हम्म. सिविल है सर, सिविल है बैकग्राउंड मेरा। अच्छा अच्छा और बाकी वहाँ पे मेडास वगैरह भी यूज करते हैं जो सर है। अच्छा. अच्छा, अभी एक 2E का करके एक न्यू सॉफ्टवेयर आया है ना? 2E। हाँ. हाँ सर, इसके बारे में कुछ ऐसा अपडेट नहीं है मुझे। अच्छा अच्छा, वो ऑटोकैड लेवल का है तो 3D मैक्स सब अच्छा। अभी नया नया आया है शायद. ठीक है. अभी को आपको जीआईएस से रिलेटेड काम दिया नहीं गया है शायद? नहीं नहीं, अभी दिया नहीं है, मुझे बोला कि इसको आप सीख के रखो, क्योंकि आगे जैसे जैसे वो आएगा ना टाइम, तो हमें हम्म. इसकी जरूरत पड़ेगी। अच्छा, ये अभी मैंने प्रोजेक्ट बेसिस है ना? जी जी सर, प्रोजेक्ट बेसिस है। हम्म. तो इसका अभी टाइम कितना है? 5 इयर्स? इसका प्रो ड्यूरेशन कितना है अभी? अभी अभी जो चल रहा है? हमारे पास तो कंटिन्यू
रहते हैं सर। अच्छा। कंटिन्यू डीपीआर आप आती मतलब रहती है अभी प्रोजेक्ट की। कितने साल रह चुके हैं? मुझे सिविल में तो 7-8 साल हो गए। पहले, इससे पहले मैं इंजीनियर इंडिया लिमिटेड में था। नहीं, अभी ये जल शक्ति बोर्ड में। जल शक्ति बोर्ड में 4.5 साल हो, 3.5 साल हो गए, 4 साल होने वाले। अच्छा अच्छा अच्छा। एज ए ड्राफ्ट्समैन नहीं? एज ए ड्राफ्ट में। क्वालिफिकेशन वो बीटेक सिविल? नहीं नहीं, बीटेक नहीं है सर, डिप्लोमा। आईटीआई प्लस डिप्लोमा डिप्लोमा। सिविल। अच्छा जी अच्छा। सर। अभी बीटेक हो गया है आपका? नहीं नहीं, बीटेक किया नहीं सर मैंने। तो आप एक काम कीजिए, आप जीआईएस लाइन में अगर जाना है तो आप एक बीटेक और बीएससी कुछ भी कर दीजिए। अच्छा। क्योंकि इस लाइन में मिनिमम ग्रेजुएशन चाहिए। आपने भी देखा होगा जितना भी एडवर्टाइजमेंट निकला होगा। जी जी सर, मतलब मैंने पार्ट टाइम से ग्रेजुएशन तो कर रखी है सर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसमें मैंने तो ग्रेजुएशन किया है, मगर हम्म, हाँ बोले। मैंने डिप्लोमा के साथ साथ ग्रेजुएशन वैसे कर रखी है, डीयू से। अच्छा ठीक है। तो ग्रेजुएशन हो गया है ना आपका? जी सर, ग्रेजुएशन हो रखी है सर। किस सब्जेक्ट में? ग्रेजुएशन मेरा बीए से किया हुआ है। बीएससी? बीए बीए, अच्छा बैचलर ऑफ आर्ट्स। अच्छा अच्छा। लेकिन आपका साइंस भी हो सकता था, आपका ग्रेजुएशन प्लस टू है या नहीं आपका? +2 है सर। प्लस टू साइंस ना आर्ट्स? +2 साइंस है सर मेरा। तो आप एक बीएससी, अगर देखिए यहाँ में एक एमएससी कोर्स है अभी इग्नू में, जो एमएससी जियो इन्फॉर्मेटिक्स। जी तो सर। उसमें अगर हो सकता है नेक्स्ट ईयर में आप एनरोल कर दीजिए, वो भी डिस्टेंस मोड में है। सेम सिलेबस है, डिफरेंट चीज़ ये कि और एक एक साल पढ़ना पड़ेगा। और अच्छा। सिलेबस फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर सेम है, थर्ड सेमेस्टर में थोड़ा सा अलग है, और फोर्थ सेमेस्टर टोटल प्रोजेक्ट बेस्ड है, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर एमएससी हो जाता है तो फ्यूचर के लिए अच्छा है। तो उसका जो रिक्वायरमेंट है ठीक है। उसको थोड़ा देख लीजिए। ओके। तो ओके सर। फ्यूचर आपका जो अपग्रेडेशन के लिए बहुत अच्छा होगा। ओके, फिर जी देखते सर। हैं। अभी तो शायद ज़्यादा धीरे धीरे आएंगे। ओवरऑल जो है जी सर। अभी। ओके, देखते हैं। अभी दिखा रहा है ना स्क्रीन? हाँ सर, स्क्रीन आ रही है सर। आवाज भी आ रही ओके है, स्क्रीन भी आ रही है। ओके। ठीक है, देन नॉन लीनियर कंट्रास्ट एनहांसमेंट जनरली क्या होता है कि हमारा जो डिफरेंट सैटेलाइट इमेज है उसको जो एनहांस करते हैं, दैट इज नॉन लीनियर कंट्रास्ट एनहांसमेंट। इनपुट आउटपुट डाटा वैल्यू डू नॉट फॉलो लीनियर रिलेशनशिप्स। सो दैट्स वाई जब लीनियर रिलेशनशिप्स नहीं होता है डिफरेंट पिक्सेल्स में, जो सैटेलाइट इमेज में, then non-linear contrast enhancements are required. So in this case, input and output are related via transformation function like y is equal to fx. So some functions are there, तो उससे जो रिलेटेड होता है तो उसको नॉन लीनियर कॉन्ट्रास्ट एनहांसमेंट करते हैं। So increase or decrease contrast in different region of histogram, like mathematical models are there and statistical models are there, like logarithm, inverse log, exponential, square, square root, cube, cube root. These are all related to mathematical uh, techniques. Then statistical में है histogram equalizations, Gaussian straits, trigonometrical arc tangent. These are तो different contrast enhancement है। तो जनरली contrast enhancement जो होता है, सो लुकअप टेबल जो है हमारा, जो स्क्रीन होगा, तो जनरली क्या होता है कि सपोज दैट इज ए इमेज एंड इज ए फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी, ये जो इमेज का इतना एरिया है, इसको हम एनहांस करते हैं। सपोज थोड़ा सा ब्लैकिश एरिया होगा या थोड़ा सा ब्लर एरिया होगा, तो आपको आपको जो एनहांस करते हैं उसको, ये 0 to 50 और 56 ग्रे लेवल में है।
तो उसको हमको स्ट्रेच करके 0 टू 255 लेवल को लाना है। तो उसको जो स्ट्रेच करने के बाद जो स्क्रीन में दिखाई देता है, तो उसी को हम लुकअप टेबल में देखते हैं। तो ओरिजिनल इमेज एज ए बैकअप रहता है, जैसा रहना चाहिए, बट इसका जो एनहांसमेंट है, हम उसको एनालिसिस कर सकते हैं। तो इसी को ही कहते हैं एनहांसमेंट, linear non-linear enhancements for different purpose. So this is वन ऑफ द एग्जाम्पल। सपोज अगर कुछ शैडो रीजन आ गया या कुछ ब्लैकिश आ गया, तो इस रीजन, ये जो 2 0 to 255 है, सो 0 इज सिग्निफाइज ब्लैक, देन 255 सिग्निफाइज वाइट। सो इन बिटवीन 0 to 255 डिफरेंट ग्रे लेवल इंक्रीज करता है। अगर ये फर्स्ट स्टेज में अगर आ गया इमेज, देन थोड़ा सा डार्किश आएगा, देन मिड टोन में आ गया, थोड़ा सा ग्रे लेवल आएगा, और इस एरिया में आ गया, देन इट इज वेरी ब्राइट। सो इस लेवल में है, तो हिस्टोग्राम डिफाइन कर देता है कि दैट इज दिस इमेज इज इन द which zone, so it is more brighter or more darker or in the mid level. So this is the result of one of the histogram. Tonal range is there, so we can expand it from 0 to 255 using different enhancement technique, so that the pixels are enlarged and the pixel informations are looking different for different object, for our different object recognitions. So suppose different area में हमको enhancement चाहिए, क्योंकि कुछ एरिया में डार्कनेस है, तो उसको एनहांसमेंट करने के बाद थोड़ा सा पिक्सल वैल्यूज क्लियरली विजिबल आ जाता है। तो दिस इज यूजफुल फॉर द इमेज एनहांसमेंट। सो ये है contrast enhancement. So gradually the contrast of this image increases, and this is the finest contrast enhancement. So likewise, different pixels. This is the photograph. So in the satellite image, the pixel level enhancements are there, so that the view of the satellite image will be very clear. So this is the contrast enhancement technique using in this photograph. So first photograph, there is very less visible, clearly visible of different objects. Then in the third and fourth, so it is look like a good photograph. So more contrast enhancement also darken the images. So the mid level of enhancement is required as per our requirement. Then gamma stress refers to the degree of contrast between the mid-level gray value of an image. Gamma does not affect the black and white value in an image, only the middle value. So when we discuss about this, this is the middle value, mid-tone value. So it is the black related information, that is the brightest information. So gamma, by applying gamma correction, one can control the overall brightness of a raster data. Additionally, gamma changes not only the brightness but also the ratio of the red to green value. And the gamma values less than 1 decrease the contrast in the darkness areas and increase the contrast in the lighter areas. So gamma value less than 1 is the decreased contrast and darkness areas, and the increased contrast in the lighter areas. So darkness the image without saturating dark and light areas of the image. So this is of the original image. There is no stretch, the first image, then original image with 0.5 gamma, then original image with 1.5 gamma. So it is not necessary to always stress gamma. So depend upon your visibility and clarity, we can stretches. So just example, I go to the software. So this is our Sentinel satellite image. Then we have to, there are various stretch types are there.
standard deviation, histogram equalization, minimize equalization, histogram specification, then is 3 for sigmoid. So suppose there is a standard deviation is there. So like this, the image is looking like this. And for the histogram equalizations, this is the result. Then minimum maximum, it is like this. So it is looking very dark tone. And in this minimum maximum histogram changes, you can also see the clear visible of all the objects in the satellite image. Like these are the clearly visible images. Then histogram specifications, there is no image. Then E3, it is like this. Then sigmoid, it is like this. So in the sigmoid also we can get this type of clear visible image. So where अभी हम कस्टमाइज कर रखते हैं, सॉरी नॉन को, देयर इज नो स्ट्रेस, parental clip. Okay, so the original parental clip stretch is there. So previous background stretch is considered as its original stretch. Then minimum maximum, then apply gamma stretch. This is the gamma stretch. If it is 1, then it's look like this. If it is 0.5, because it has 3 bands, so we have to change all bands with different value. This is the gamma stage. Then we can change 0.1, 0.1, 0.1. So it's look like this type of image. So there is no need of gamma stage for this light image. So when we give the gamma stage, the brighter tone of this satellite images are highlighted, like the high reflectance values. These are the, ये अभी क्या है कि अभी सी बीच है, अभी सैंड एरिया, देन different dry land areas are highlighted in the brighter tone, and other vegetables, vegetative जो भी चीज़ है उसमें हम ब्लैक टोन दिख सकते हैं. तो ये ज़रूरी नहीं है, फिर भी हमने दिया है 0.8, 0.8, 0.8. Okay, then 1, 1.5, 1.5. It is not necessary. Already the image is in good quality, so there is no need of gamma stretch. Then statistics, current display extent is there. We can look like this. It is looking like just darker tone of the satellite image. Then for each raster data set, it's small little bit of the brightness of the satellite image. So depend upon your requirement for identification of features, you can get different informations.
This is the histogram of red and blue and green band. So blue bands reflects more values, different bands stretching different लेवल. सो ये अभी क्या है कि हमारा डिफरेंट डिफरेंट बैंड का कितना स्ट्रेच गया है, ब्लू ग्रीन रेड. सो ब्लू इज स्ट्रेचिंग मोर, green less, red very less. Then this is the gamma stretch. Then this is the original image. Then after gamma stretch, this is the image. So because our image already have good reflectance value, so there is no need of gamma stress. But in this case, the image is not clearly visible. That's why the gamma stress is needed. तो इसमें थोड़ा सा क्या है कि डिफरेंट कंट्रास्ट वैल्यू चेंजेस आ जाता है गामा स्ट्रेस में. So it is a logarithmic contrast trace, that is linear, non-linear, and piecewise linear. So logarithm contrast, these two trace is not required. Then histogram equalization, अभी जो देखा हमने, in this technique histogram of the original image is redistributed to produce a uniform population density, and this is obtained by grouping certain adjacent gray values. So generally histogram में जो सर्टेन एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है हमारा पिक्सल का डिफरेंट इंफॉर्मेशन, तो उसको हम यूनिफॉर्म में स्ट्रेच करके उसका ग्रे लेवल को ज़्यादा एनहांस करते हैं. उसके बाद हमको जो इमेज आता है तो वो थोड़ा सा क्लियरली विजिबल आ जाता है. तो जब इमेज के ऊपर डिपेंड करता है, इट कैन बी हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन रिक्वायर्ड और गामा स्ट्रेच रिक्वायर्ड और linear stretching required or not. So if it is clearly visible, that is then there is no need of any type of image enhancement techniques is required. So the number of gray level in the enhanced image is less than the number of gray level in the original image. So contrast is increased at the most populated range, and brightness value of the histogram changes. So when the question, sometimes questions, these points, just write these points in the histogram equalization techniques during your exam when asked what is the histogram equalizations, and some image figures are there. So this type of figure you just draw, then I think 5 या 10 मार्क का क्वेश्चन आता है हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन का. तो ये पीपीटी में शेयर कर दूंगा, तो इसको थोड़ा देख लेना. It is automatically reduce the contrast in very light and dark part, and gray level value are assigned to display level on the basis of their frequency of occurrence. Image analyst must be aware that the high histogram equalization often provide an image. So basically histogram में क्या होता है कि only जो pixels value reflectance value है उसको थोड़ा enhance करना है, different spreading zone थोड़ा बढ़ाना है. So ये है histogram equalizations. So suppose the pixel reflectance concentrated in the larger way in this area and in small way in this area. So from 84 to 153, this is the image where the reflectance value 84 to 153 is there. So we enhance and stretch it into 0 to 255, so that the graph of the pixel reflectance is very smooth, so equally distributed. So this is the band, and this is the original image. Then if histogram equalizes stretch image, so this is the stretch image. So it is not required for everything, but in the practical exam you are asked to change a histogram equalization by giving you a satellite image of small area. Then you have to stretch and
give in the this type of format and give the this type of graph. This is your practical exam question. So how to histogram equalization techniques are there. It is not nothing but just stretching the pixel value. So in this slide image, it is like this is the histogram, stretching the histogram information. So indeed it is the invert the histogram, and it is the equalization. So this is the histogram equalizations. Suppose uh, so in this original image, this is the original image, that black color histogram. So it is now stretched in to total spreading of these areas. So you can give this is the example and this is the result. So basically this portion of pixel reflectance informations are stretched to full एक्सटेंड्स। तो जो जितना भी रिफ्लेक्टेंस एरिया है उसको जो हम एक्सपांड करके एक्सटेंड करते हैं उसको ही हिस्टोग्राम हिस्टोग्राम को इक्वलाइजेशंस करते हैं। सो इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड नाउ पेरेंटल क्लिप। We need to parental click. So it is not permanently changes, permanently चेंज नहीं होता है। किसी सपोज किसी एप्लीकेशन के लिए थोड़ा सा हमको चेंजेस लाना है तो हम उसको ला सकते हैं और उसको हम आउटपुट करके सेव कर भी सकते हैं, बट दिट इज नॉट रिक्वायर्ड, जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस फॉर डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस। This is the histogram equalizations. So it is generally the equalization of the histogram graph to 0 to 255 or minimum to maximum level of reflectance. So 0 to 255 is the reflectance value, DN value, that is digital number, for a 8-bit computer, 8-bit satellite image. So 8-bit means 2 to the power 8, and it is resulted into 256. So 256 is divided into 0 to 255 values. So if 0 included, then 255 plus 0, then 256 values are there. That's why 256 is arranged from 0 to 255 value. Suppose in this satellite image, lot of DN values are there. So in these pixels, so this is very bright. This pixel is very bright. This pixel is very bright. So this pixel value is 2381 because it is not a 8. It is 16, I think it is a 16-bit 16-bit image. That's why it looks like the value is high. And this is the red, green, and blue band value. And for this pixels, that is 571. So there is a very low value for the darker pixel informations, and this is very high value for brighter. So for this, it is for red 1325, for white it is 2381. So if the brightness of the pixel is
very good, then the reflectance value is very high. If the brightness is very low, then pixel value is very low. So this reflectance arranged in a way that we can get a features like river or any settlements or any other water bodies. So generally, water bodies in the infrared, the pixel value is very high, very low because it absorbs most of the reflect radiations. So this is our river. So that pixel is very dark tone. So it is 500 to 1000 in the river area, but in the river bank it is 2000, 1600. It is more than 1000. So this demarcate the water bodies from the land part. And in the settlement area also, this is the settlement area, also more than 1000. It is 1000, 2000, and this is more reflectance. So basically, in the satellite image, the water bodies get the very dark component. Then some mud flat area. This is in the coastal area, mud flat area. It is also very dark. So it is also in between 100, 1000 to 1200. तो these are some information. So basically क्या होता है कि जो पिक्सल जो सैटेलाइट इमेज है, वो जो पिक्सल का रिफ्लेक्टेंस वैल्यू बेस्ट इमेज होता है। तो डिफरेंट साइंटिफिक एनालिसिस जो होता है, लैंड एंड पावर मैपिंग और एनडीवीआई एंड डीवीआई और अदर इंडिसेस है बेस्ड ऑन देयर पिक्सल वैल्यू। सो इस पिक्सल वैल्यू के बेस्ड में ही हम डिफरेंट रिमोट सेंसिंग टेक्निक यूज करके लैंड यूज लैंड कवर या वाटर बॉडी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज वाटर बॉडीज हैज सम same type of values are there for river or for any pond. So getting all this information, we get the water bodies layer. Then the percentage of cutoff strays, standard deviation, linear strays. So these are the different techniques like percentage linear contrast trace similar to the maximum. So how much percentage you have to expand the stretching. So this is the percentage cutoff trace. Then standard deviation linear trace similar to the minimum maximum, which is uh, we have seen अभी जो देखा हमने minimum maximum stretch in satellite image. Contrast trace except this mode uses a specific minimum maximum value that is fly out certain standard deviation of pixels. Then standard deviation from mean also used to push the tail of the histogram. So these are the different techniques. So based on the different techniques, the result is different. And for different purpose, the contrast जो different हम use करते हैं, तो उसका different application के हिसाब से हम उसको स्ट्रेच करते हैं। अदरवाइज इट कैन नॉट बी स्ट्रेच फॉर डिफरेंट यूजेस। So it is a original image, then the standard deviation stage image. So it's looks slightly good up before the original image. So this is the histogram of the original image. Then this is the histogram of the standard deviation image. So it is also अभी जो हमने देखा सैटेलाइट इमेज में स्टैंडर्ड डेविएशन का, उसका एक एग्जांपल है। Then Fourier series and transform. So Fourier, Jean-Baptiste Fourier, 1968, mentioned that any periodic function can be expressed as a weighted sum of sine and cosine. So सब जितने भी वेव्स है साइन एंड कोसाइन फॉर्म में यूज होता है। तो इसमें क्या है कि दिस इज द शॉर्ट wavelength and high frequency wave, then it is middle level of frequency wave,
then it is low frequency wave, and it is very low frequency and greater wavelength. It has greater wavelength. It is also middle level of wavelength. So different frequency level information सैटेलाइट इमेज में आता है, जैसे कि इट इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज आर इन्वॉल्व एंड डिफरेंट वेवलेंथ्स आर इन्वॉल्व. सो अगर अभी इमेज में डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आता है, तो उसको हम अगर मर्ज कर देते हैं, जॉइन कर देते हैं 1 2 3 4 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी लेवल को, सो दिस इज द रिजल्टेंट फ्रीक्वेंसी लेवल. So this is called the forward series. So this forward series is used in the remote sensing technique to eliminate different distortion, different errors in the satellite image. The function at the bottom is the sum of the four functions above it. So it is written that all the functions are sum of the function of this is the result, and the Fourier idea in the 18th, that periodic function can be represented as a weighted sum of the cosine and cosine. So this is the brightness. Then these are all included in these areas. So these are the DNA values informations. So any image and natural scene can be regarded as the reconstructed from a spectrum of sine wave with different direction, wavelength, and amplitude. So every scene of the satellite image directed in showing in the different wavelength amplitude. Such construction is not just Fourier synthesis, and the de-assembling of image into family of sine wave is Fourier analysis. So after combinations and de-assembling all these things, this technique is called Fourier analysis. The spot, line, and bar that form in target for test of accuracy and form image are then made up of sine waves. Small dots, closely spaced lines are dominated by high amplitudes and the size increases. Suppose किसी किसी सैटेलाइट इमेज में थोड़ा सा स्ट्रीप आ जाता है, कहीं पे डॉट आ जाता है, कहीं पे थोड़ा फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस आ जाता है, हाई फ्रीक्वेंसी इमेज आ जाता है, देन लो फ्रीक्वेंसी आता है, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करते हैं. तो if question is asked for Fourier transformation, then this is the definitions. Then these are the characteristics of the Fourier transformations. You can write it, and this is the one of the example. So in the coordinates of the 2D space in which the scale components are represented in given in the frequency called frequency domain, but in the nominal रो कॉलम, जो भी रो कॉलम वे में हम इमेज देखते हैं पिक्सल रिलेटेड coordinates in which image are nominally expressed in column spatial domain. So frequency domain is in the graph form, 2D form, but in the pixel related information that is called spatial domain, because space based information, that's why it's called spatial domain. So ये अभी देखिए टाइम वेव फॉर्म है. It is amplitude. Amplitude means the height of the wave. Then it is the time durations, and it is expressed in the frequency response. So there are four hertz. There is the 1 2 3 4 notes are there. So that the 4 hertz is there. So that is it is written as the 4, and the frequency is written in this area. So in this waveform, there are 12 hertz amplitude is there. So 1 2 3 4 12. So it is written in 12, and the magnitude is there. It is written in this. So if we join this 4 and 12, so this is the final resultant of the waveform. So after joining this, we get the information of 4 hertz and 12 hertz. So this is in the graph. It is 12 and 4. So these informations are
attached with this waveform. So if in the 12 range is having some issues, so we just eliminate some wavelength so that the image will be looking very clear. So in this way, this in the remote sensing techniques are there. So we have to eliminate some of the frequencies so that the image will be looking very clear. So ये है different different wave form. So after joining, this is the resultant wavelength. So generally frequency जो ट्रांसफॉर्म फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में डिफरेंट लेवल ऑफ एरर्स आ आता है जब जब फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स how the variations of colors are affected. So in this a in this figure in this figure in the vertical area is in the vertical area में ज़्यादातर कलर वेरिएशंस नहीं आता है. From left to right, there is a variation of color from gray to black, then gray to white. So the color variations is in the horizontal direction. So the frequency domains are in this area. So it is denoted in this in the dotted line in the horizontal direction. But in the B image, the color variations are in a diagonal directions. And then the black, white, gray, black, white. So in these directions is more, but in this direction only white is there, on the black is there. So that's why the variations of colors in the directions are measured. So which direction the color is varied, किस डायरेक्शन में हमारा कलर चेंजेस आता है. सो जनरली फोरियर ट्रांसफॉर्मेशंस हम ज़्यादातर ब्लैक एंड वाइट इमेज में करते हैं. तो दिस इज द डायरेक्शन फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन. दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्शंस. Then in the C image, the multiple directions are there. So immediate changes is in the diagonal. Then some horizontal positions are there. That's why the direction is in the horizontal and diagonal. So this is also detected in these techniques. So which direction the color is varied. So these are some formulas for one-dimensional Fourier transformations, then two-dimensional Fourier transformations, mm, then cos theta and j sin theta. So after that, using this formula, then we get the transformation. So this is the original image, and this is the transformation direction. So after getting the Fourier transformations, this is the high frequency data. So it is concentrated in these areas, and this is the low frequency data. So we just eliminate some high frequency data by using the low frequency blocking and inverse transformation. So this is the result of the image. So this image is looking very clearly visible in this D image by using Fourier transformation and blocking some filters, high frequency filters. The frequency filters operation is carried out as per following steps, like the original image is transformed to its frequency representation using Fourier transformations, image processing, selection of appropriate filters, transfer functions, and the inverse Fourier transformation performed to return the spatial domain for display purpose. So this is the some error area in the image. So these are the different frequency and very erroneous images are there. So after that, the frequency domain is given in this form. Then after frequency transformation, the resultant is like this. So it is clearly visible
the satellite image, but due to the some different frequency errors are there, so this is not used for the different applications. The magnitude of the Fourier transformation image noise shows a variety of spikes and lines as explained using different filters. This is the one of the problem area which image of affected by spurious low data and lines, erroneous lines are there. So it is corrected using different transformations. So generally क्या होता है कि methods involved on identifying frequency and amplitude of striping or other perceived systematic defects such as superimposition, the real variations, periodic noise. So in the Fourier transformations, we just corrected all type of noise and strips, and some of the image getting the high frequency data. हाई फ्रिक्वेंसी मीन्स सपोज एक इमेज है तो उसमें थोड़ा सा ब्राइटनेस जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा आ जाता है डिफरेंट फ्रिक्वेंसी हाई होने से, तो उसमें क्या होता है सम फिल्टर्स आर are used to check this high frequency in data, so that the high frequency data can be checked and the image is clearly visible by filtering using different filters. For low filters and high filters are there, and after using this we get different images. So it is generally not not seen in all the part of the satellite image. Some part of the image get this type of information. Then this is also one of the error, how to eliminate this type of noise. So this is the graph of the frequency distributions. So this image is automatically convert to its frequency level. So it is the frequency domain of this image. So after that, the frequency level is uh, divided and spread somehow extend, so that the frequency distribution is distributed in different directions, so that the image is clearly visible as compared to the first image. So as per our previous class, some of the different stripe, different haze, different cloud, or different atmospheric effects are there. So these are corrected using different model. So likewise, if the high frequency data and low frequency data are overly loaded in the images, so that the different filters of frequencies are there. So it is corrected by using different frequency to pass the uh, frequency in the middle level, not in the high frequency data, so that the some high frequency informations are checked and the filter image is corrected. So these are very unique techniques which are used for different using the Fourier transformation technique. So these are not uh, possible in the RGS software. So some AirDAS and other programming softwares are there. So in this we can change the Fourier transformation like AirDAS software and NV. These are also used for this transformation technique. So this is the example. Then for the transformation image and the noise pattern, then vertical waves block filters are has been applied to the spectrum. This filter passes the low frequency component of the image, but blocks the high frequency component of the original image trending in the horizontal direction.
So likewise, this type of corrupted images are there. So in our satellite image, there is no such high frequency and low frequency data there because it is corrected uh, using different filters. So sometimes this type of the white patches are there. So if it is more white, then it looks like the high frequency data. So it will be corrected by different uh, high pass filters and low pass filters. So in this is the sandy area of the river. So its DN value is very high. So it is almost 3,500 and near to the 3,000 pixel, and near to this water bodies, it is very low. So these pixels are very low DN values, that is 700, 800, 1000. So DN value signifies the very different reflectance of the images. So after that, in the next class, we can discuss the what is the supervised classifications and unsupervised classifications. Then NDVI, how to calculate NDVI and DVI and NDVI. So different indices are used based on the satellite image reflectance data, and it is categorized into different category using the machine learning techniques, that is supervised and unsupervised. So some of the tools used in the hydrological analysis are there, like basin, sink, streamline, stream order, watershed mapping. Then some raster calculators methods are there. So this is the raster calculator method. So we can calculate different images, then NDVI, band ratioing, all the techniques are used using this raster calculator. So it is calculating the raster values in the satellite image, then give a different result as per our requirement. So different algorithms or different methods are there to calculate the different indices. So I think just one software is there, link is there, ArcGIS, download ArcGIS software.
So go to this site, then download the latest version for Windows. So it is downloaded. So it is like 1.2 GB. I just give you the link in the chat box. This is the QGIS software. You can download this. एंड जो आरजीएस का है उसका मैं लिंक दे दूंगा, अभी तो नहीं है अवेलेबल, अभी व्हाट्सएप में मैं दे दूंगा अगर अवेलेबल होगा तो। ओके अमित, अभी कुछ डाउट है आपका? नहीं सर, वो एक बार पीपीटी आप शेयर कर देते सर। अच्छा अच्छा, पीपीटी। जी हाँ हाँ, सर। पीपीटी कर दूंगा। और ये अगर क्यूजेस चाहिए तो इस लिंक से आप ऑन कर सकते हैं, डाउनलोड कर हाँ सकते सर, हैं। वो मैंने देख लिया कि कहाँ कहाँ से ये फ्री डाउनलोड का है QGIS। हाँ, अगर क्यू आरजीएस का अगर लिंक मिलता है तो मैं भेज दूंगा, ओके, क्योंकि आरजीएस ओके सर। अवेलेबल नहीं है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जी सर। सर उसको मुझे एक चीज देखते। पूछना था कि, हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, मुझे पूछना था कि सर हमारी कोई वैसे प्रैक्टिकल क्लास भी होगी कि? नहीं, प्रैक्टिकल का अलग सीजन है, उसका उनका शेड्यूल जब होगा तो बता बता दिया जाएगा। अभी तक तो अच्छा, हमारे मतलब। पास। हाँ। हम्म, मतलब क्लास ठीक है। होगी ना सर प्रैक्टिकल की? हाँ, प्रैक्टिकल की तो होना चाहिए, क्योंकि आपका जो रीजनल सेंटर है उसके पास ही होना चाहिए, क्योंकि अभी तो आप डिफरेंट डिफरेंट क्योंकि रीजनल एरिया। सेंटर तो दिल्ली है हमारा। हाँ, दिल्ली में शायद हो सकता है। तो RC1 दिल्ली में है, मोहियाल इंस्टीट्यूट है, जहाँ हाँ। पर पहले, आज मतलब इसी साल इन्होंने ऐसा करा, नहीं तो इससे पहले वहीं पर होता था। ओके, फिर देखते हैं उनका क्या शेड्यूल है। उसके जी बाद सर। एग्जाम दिसंबर में है ना? यस सर, दिसंबर में। ओके, ठीक है, मैं पूछ के बताता हूँ, ओके। या फिर ये जो पूरा वो कर रहे कोऑर्डिनेटर का किसी का मिल जाए फोन नंबर जिससे बात हो सके। अच्छा, उसका तो आपका वेबसाइट में जाना पड़ेगा, वेबसाइट में डिटेल्स कॉन्टैक्ट नंबर है। वेबसाइट में वो लैंडलाइन नंबर है, उस पर कॉल जाती है, मगर कोई ऐसा पिकअप नहीं करता सर उसको। हम्म, ठीक है, मैं देखता हूँ, ओके। जी सर। थैंक यू सर।